মই আমাৰ দলটোৰ প্ৰতিগৰাকী কাৰ্যকৰ্তাকে অনুৰোধ কৰিম আপোনালোক সকলোৱে দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াক আশীৰ্বাদ কৰিব শুভ কামনা জনাব যাতে তেখেতে আমাৰ আশীৰ্বাদেৰে আমাৰ শুভ কামনাৰে আমাৰ সাহসেৰে আমাৰ দলটোক যোগ্যতাৰে নেতৃত্ব দিব পাৰে দিলীপ শইকীয়াৰ যোগ্যতা সম্পৰ্কে আমি সকলোৱে জানো সাধাৰণ পৰিয়াল এটাৰ পৰা ওলাই আহি অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ মঞ্চেৰে ভাৰত মাৰ পৰম পূজাত নিজকে বিলীন কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ এজন সক্ৰিয় স্বয়ংসেৱক হিচাপে নিজকে পৰিচয় দি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত প্ৰৱেশ কৰিছিল নেহেৰু যুৱ কেন্দ্ৰৰ দৰে অনুষ্ঠানৰ তেখেতে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু মঙ্গলদৈ লোকসভা সমষ্টিত দুবাৰৰ বাবে প্ৰতিবাৰে বিজয়ৰ মাৰ্জিন বৃদ্ধি কৰি দিলীপ শইকীয়া লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল আজি দিলীপ শইকীয়া আমাৰ লোকসভাৰ সভাপতিৰ পেনেলত অধিষ্ঠিত যেতিয়াই লোকসভাৰ অধ্যক্ষই লোকসভাক সভাপতিত্ব নকৰে সেই সময়ত লোকসভাক সভাপতিত্ব কৰাৰ অভূতপূৰ্ব দায়িত্ব দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত ন্যস্ত আছে দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই সেইজন ব্যক্তি যিজনে অসমৰ পৰা প্ৰথমবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক হোৱাৰ গৌৰৱ অৰ্জন কৰিছিল দিলীপ শইকীয়াৰ আগতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কোনো কাৰ্যকৰ্তাই ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব ল'বলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল বা অসমে তেনে দায়িত্ব পাবলৈ আমি সুবিধা পোৱা নাছিল ঝাৰখণ্ড অৰুণাচল এছটি মৰ্চা আদি বিভিন্ন দায়িত্ব দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই নিষ্ঠাৰে সৈতে পালন কৰিছিল আৰু যোৱা বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত আমাৰ ইলেকশ্যন মেনেজমেণ্ট কমিটিৰো কনভেনৰ হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰি দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই নেপথ্যৰ পৰা সমগ্ৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন পৰিচালনা কৰিছিল এজন সকলো ফালৰ পৰা যোগ্য আৰু সকলো ফালৰ পৰা এজন সাহসী শক্তিশালী কাৰ্যকৰ্তাই ভৱেশ কলিতাৰ পৰা সভাপতিৰ আজি দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে যিখন পতাকা ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াই দিলীপ শইকীয়াক তুলি দিলে সেই পতাকাখনৰ মান আৰু সেই পতাকাখনৰ সন্মান ৰক্ষা কৰি আমাৰ দলটোক 2026 চনত তৃতীয়বাৰৰ বাবে শাসনলৈ ঘূৰাই অনাৰ এক দায়িত্ব আজি আমি দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত ন্যস্ত কৰিছো মই বিশ্বাস কৰো দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্বাচন দ্বাৰা নেতৃত্বত দিলীপ শইকীয়া এশৰ অধিকাৰী আৰু ভগৱানে কৰিলে মিত্ৰ দলৰে সৈতে আমি হয়তো বিধানসভা নিৰ্বাচনত 100 বিধায়কৰো অধিকাৰী আমি হ'ব পাৰো কোনো টান কথা নহয় 94টা সিটত আমি লোকসভাত জিকিছো আৰু মাত্ৰ 6টা সিট লাগে আমাৰ বাবে আৰু এটা গৌৰৱৰ কথা ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি বিধানসভাত আমাৰ মিত্ৰ দলত নোহোৱাকৈও সংখ্যাগৰিষ্ঠ দল হিচাপে পাবলৈ সক্ষম হৈছিল আমি মিত্ৰ দলৰ লগত থাকি কিন্তু মিত্ৰ দলৰ লগত থকাৰ পিছতো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বিধায়কৰ সংখ্যা 75ৰ দেউনা দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বতে আমি পাৰ কৰিম তেনে এক সংকল্পও আজি আমি নিশ্চয় গ্ৰহণ কৰিম মই বহুত ক'ব নোখোজো আমাৰ দলে কাৰ্যালয় কাৰ্যকৰ্তা কোষ আৰু কাৰ্যসূচী এই 4টা কৰে আজি আমি ৰাজ্যখনক মহিয়ান কৰি তুলিছো আমাৰ দলটোক মহিয়ান কৰি তুলিছো আমাৰ ৰাজ্যখনক বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ এক নতুন উৰ্বৰা গতিলৈ আজি আমি লৈ গৈছো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃত্বত আজি অসমত আজি আমি আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতি আমি এক নতুন দিগন্তলৈ লৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত আমি আমাৰ ৰাজ্যখনক বিকাশৰ এক নতুন দিগন্তলৈ লৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছো মই আজিৰ দিনটোত পৰম পিতাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কেৱল মাত্ৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ শক্তিৰে শক্তিবন্ত নহয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত অসমৰ ৰাইজৰ অকুণ্ঠ আশীৰ্বাদ আছে আৰু দিনে দিনে মই যিমানেই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত সময় কটাইছো মোৰ মনত
এটা বিশ্বাসও আছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত আধ্যাত্মিক শক্তিৰো আশীৰ্বাদ আছে। নহলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে এনেকৈ কেতিয়াও এটা পৰিয়ালৰ ওচৰত দলটোক যাব নিদিয়াকৈ ৰক্ষা কৰিবলৈ কেতিয়াও সমৰ্থ নহলহেঁতেন। আজি যি কাম কংগ্ৰেছে কৰিব পৰা নাই, সমাজবাদী পাৰ্টিয়ে কৰিব পৰা নাই, ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা পাৰ্টিয়ে কৰিব পৰা নাই, কোনেও কৰিব পৰা নাই। বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াই যদি ইচ্ছা কৰিলেহেঁতেন, জনসংঘৰ দিনত যদি শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীয়ে ইচ্ছা কৰিলেহেঁতেন, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যদি আজিও ইচ্ছা কৰে, দলটোত পৰিয়ালক্ৰমটো আনিব পাৰে। কিন্তু কোনোবা আধ্যাত্মিক শক্তিয়ে ভাৰত মাৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে, ভাৰত মাৰ সভ্যতা আগুৱাই লৈ যাবলৈ এনেকুৱা এটা দল নিৰ্মাণ কৰিছে, যি দলটো সাধাৰণ ভাৰতীয়ৰ দল হৈ থাকিব, সাধাৰণ কাৰ্যকৰ্তাৰ দল হৈ থাকিব। আধ্যাত্মিক শক্তি অবিহনে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এনেকৈ কেতিয়াও চিৰ প্ৰবাহমান সুতিত পৰিণত হ'ব নোৱাৰিলেহেঁতেন। এই দলটোৰ এজন আমি শক্তিশালী কাৰ্যকৰ্তা, এই দলটোৰ এজন আমি একোজন গৌৰৱী কাৰ্যকৰ্তা, আৰু মই আশা কৰিম দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ দায়িত্ব গ্ৰহণৰ এই শুভ দিনটোত আমি আকৌ এবাৰ নিজৰ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক মহিয়ান কৰিবলৈ আমি আকৌ এবাৰ নিজক সংকল্পবদ্ধৰে আমি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধৰে আগবাঢ়ি যাম। मैं असम प्रदेश बीजेपी का ओर से हमारे माननीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को धन्यवाद देता हूं। कल आपने एक बार भी कौन नया अध्यक्ष बनेगा इसका बारे में आपने एक बार भी मेंशन नहीं किया। आपने आते ही हमें बोला कि अगर कोई और व्यक्ति कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं आप मना मत कीजिए। इसलिए बीजेपी को डेमोक्रेटिक वैल्यू को हमें आधोल करना है। शेखावत जी ने बहुत ही बढ़िया तरीका से उन्होंने चुनाव का रचना किया और नेशनल एग्जीक्यूटिव तक आज बड़ी ही सबका उत्साह और उद्दीपना का साथ ये चुनाव का समापन भी किया। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, शेखावत जी को मैं इसलिए धन्यवाद नहीं दूंगा कि इलेक्शन को बढ़िया से समापन किया, लेकिन शेखावत जी ने आसाम के दो बड़ी काम में सबसे बड़ा हिस्सेदारी किया। आप लोग जानने के लिए इच्छुक होगा ऐसा क्या काम कर दिया शेखावत जी ने। मैं पहला बताऊंगा, हमारे आसाम का जो सरायदेव मैदान यूनेस्को में जाके नेशनल यूनिवर्सल वर्ल्ड हेरिटेज हुआ, इसका नेतृत्व भारत का ओर से शेखावत जी ने लिए थे। यूनेस्को कल्चरल डिपार्टमेंट से आते हैं और हमारे ये पूरा काम में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में नेतृत्व दिया था और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कारण ही हमें सरायदेव मैदान को यूनेस्को का हेरिटेज मिला और वही विभाग का माननीय मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत जी। मैं कृतज्ञ असमिया जातियों का ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी और गजेंद्र सिंह शेखावत जी को मैं धन्यवाद देता हूं। आप लोगों को वो दृश्य मालूम होगा जब यूनेस्को ने सरायदेव मैदान को वर्ल्ड हेरिटेज दिया, वो सभा में भी गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने भारत को प्रतिनिधित्व किया था और पहला सुसंवाद शेखावत जी का ओर से ही हमें मिला था। दूसरा, असम को क्लासिकल लैंग्वेज का मर्यादा मिला। आप सोचेगा ये तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का बात होगा, इसमें गजेंद्र सिंह शेखावत का क्या भूमिका है। एक भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने का काम भी कल्चरल डिपार्टमेंट में ही करता है और संयोग से कल्चर डिपार्टमेंट का मंत्री शेखावत जी ही थे। मैं शेखावत जी को ये पत्र लिखा था थोड़ी दिन पहले। शेखावत जी ने ही मुझको पत्र लिख के बताया कि असमिया को ध्रुपदी भाषा को मर्यादा दे दिया गया है। बराक घाटी में बांग्ला क्लासिकल लैंग्वेज हुआ, इसके लिए भी बराक घाटी में भी काफी उत्साह है। मैं शेखावत जी को धन्यवाद देता हूं कि ये असम का 75 इयर्स का जर्नी में, 76 इयर्स का जर्नी में अगर असमिया लोगों ने कोई बड़ा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क को हासिल
हासिल करने में सक्षम हुआ, इसमें आपका बहुत बड़ा अवदान रहा। तो इसलिए मैं आज कोई कम नहीं करेगा, सब अपना, अगर हम असमिया को हम प्यार करते हो, सराइदेव मैदान को सम्मान करता हो, तो पूरा करतल से शेखावत जी को अभिनंदन करे, शेखावत जी को धन्यवाद दे। और यही करतल शेखावत जी माननीय मोदी जी तक लेके जाएगा और मोदी जी को भी बताएगा असम का लोग कितना ग्रेटफुल है, कितना कृतज्ञ है। और हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी और आपका जो हमारे लिए प्यार है, इसको हम हमेशा स्मरण करूंगा। ये मैं आपको असम वासियों का ओर से मैं यही बोल के आपको मेरा व्यक्तिगत ओर से भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरा मुख्यमंत्री का समय में ही असम को ये 2 सम्मान हासिल हुए और ये 2 सम्मान आपके लिए हुए, मोदी जी के लिए हुए। मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपको मेरा आभार प्रकट करता हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे ये पूरे संगठन पर में हरीश द्विवेदी जी बहुत ही मृदुभाषी है और बहुत ही लोकसभा का 2 बार सांसद हुए, उत्तर प्रदेश से बड़ा प्रदेश है, लेकिन असम का कार्यकर्ता का साथ एकदम अपना परिवार जैसा अपने आप को विलीन करते हुए उन्होंने हमारा पूरा संगठन पर को पूरा एक मार्ग देने का, एक रचना करने का पूरा सारे काम हरीश द्विवेदी जी ने किया। द्विवेदी जी ने जो असम संगठन के लिए इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, 65 लाख सदस्य होने का हमें गौरवान्वित करने में आपने अपना ताकत झोंक दिया। तो मैं असम का कार्यकर्ता का ओर से हरीश द्विवेदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक बड़ा ताली से हरीश द्विवेदी जी को धन्यवाद दीजिए। द्विवेदी जी का साथ ही, हरीश जी का साथ ही हमें आगे का संगठन का सफर भी पूरा करना है। मैं हरीश जी को असम का पूरा कार्यकर्ता का ओर से धन्यवाद देता हूं। हमारे उत्तर पूर्व का पूरा संगठन को बल देने का, मार्गदर्शन करने का और हमारे पूरा उत्तर पूर्व को इमोशनली, कल्चरली एक कर रखने में जो बीजेपी का एक बहुत बड़ा भूमिका होते हैं, वो भूमिका संबित पात्र जी निर्वाहन कर रहा है। संबित पात्र जी पुरी से, हम सबको जगन्नाथ पुरी बोलने से असम को और कोई दूसरा हमें बोलने का जरूरत नहीं है। पुरी से संबित पात्र जी सांसद है, लेकिन संबित पात्र जी हमारे उत्तर पूर्व का समन्वय का काम भी पार्टी का ओर से देखते हैं, पार्टी का ओर से करते हैं। मैं संबित पात्र जी को भी असम का कार्यकर्ता का ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज आमार মাজত आमार प्राक्तन सभापति सकल उपस्थित আছে और एखेतসকলে বিভিন্ন সময়ত আগবঢ়াই যোৱা বৰঙণিৰ বাবে আজি আমাৰ সংগঠনটো এই পৰ্যায়ত আহি উপস্থিত হৈছে। মোৰ মনত আছে প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ যেতিয়া আমি অন্তৰ্ভুক্তিৰ আৰম্ভ কৰিছিলো, তেতিয়াও সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যজী, নাৰায়ণ বৰকটকী, ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই আহি আমাক আশীৰ্বাদ দিছিলে। আজি তেখেতসকলে আকৌ এবাৰ আহি দিলীপ শইকীয়াক আশীৰ্বাদ দিছে। মই তেখেতসকলকো ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো। বিজয়া বাইদেউ আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈ আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোত যি ভব্যতা প্ৰদান কৰিলে তাৰ বাবে মই ধন্যবাদ দিছো। এজন ব্যক্তিৰ কথা हमें बोलना पड़ेगा। राजू जी हमारे सांगठनिक संपादक हैं। इतना सहज, इतना सरल व्यक्तित्व और जो किसी का नहीं लेकिन सबका है, ऐसा व्यक्तित्व मैंने देखा भी नहीं था। राजू जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। राजू जी किसी का नहीं, लेकिन राजू जी हम सब लोगों का है, ऐसा ही उनका परिचय है। मैं राजू जी को धन्यवाद देता हूं।